Hello, hi, assalamu alaikum. I'm Sajid Nouri and welcome all of you in this tutorial series of HTML. This is the second video of this tutorial series. In the first video, we saw and we installed the Sublime Text Editor and we knew about the browser. In this tutorial, we are going to know what HTML is and what is the structure of HTML document. So without wasting our time, let's get started. So first of all, introduction. What is HTML? The question would be like this: what is HTML? So the answer is that HTML is its abbreviation is hypertext markup language. ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जो आपके वेबसाइट्स बनाने के काम आता है। वेब पेजेस जिससे छोटे छोटे वेब पेजेस मिलते हैं, मिल के आप बनाते हैं। छोटे छोटे वेब पेजेस आप बनाओगे, उन तमाम वेब पेजेस से मिलकर आपका वेबसाइट बनता है। तो ये HTML जो है वही वेबसाइट्स बनाने के लिए और वेब पेजेस बनाने के लिए यूज़ होता है। और इसका जो लेटेस्ट वर्जन जो आजकल चल रहा है वो HTML5 का नाम जिसे दिया गया है। और व्हाट HTML is basically, HTML is made up of HTML tags which are also called as HTML elements। एंड याद रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, वैसे तो आप सब जानते होंगे बखूबी कई बंदे, लेकिन मैं उनके लिए बता रहा हूँ जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम HTML के बारे में सुन रहे हैं, उनके लिए मैं बताता चलूँ कि HTML जो है टैग्स पर मुश्तमिल है। इट इज़ मेड अप ऑफ HTML टैग्स, मीन्स दैट HTML टैग्स इस तरह से आपका कोई इमारत बनती है। इफ़ यू वांट टू कंस्ट्रक्ट ए बिल्डिंग देन ऑल द बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स, जस्ट लाइक दैट। इन टू से मिलकर बनती है ब्लॉक्स। So HTML tags are the building blocks of HTML, entire HTML. So after that we will see the structure of HTML document. So for that purpose, first of all, go to my computer and go to any location and create a folder with the name of you can create this folder in any desired location। आप कहीं पर भी कोई folder बनाएं और HTML नाम रख दें। So I have created in E drive E, and now open Notepad. As I told you earlier that for the beginning 2 or maybe 4 to 5 tutorials will be based on the Notepad text editor, because ये करने का मतलब ये है so that the beginners can easily by their own can write HTML code। That's why I'm using Notepad। When you will get familiar with the writing style of HTML, then we will inshallah move towards the Sublime Text Editor। Okay, so structure of HTML. So as I told you earlier that HTML is made up of HTML elements. So all the HTML elements they have their own meanings. So now we are going to create a web page or HTML document. Both are the same thing। Okay? If you want to say it as HTML document or web page, okay? So the structure of HTML page is like this। Okay, first of all, HTML and HTML close, just like this HTML, and I will explain to you later what is this। And after that, head and head close. In the head section you will find a title and title close। Okay, I will put some spaces over here so that you can easily understand। And after the head you will start a body and body close, sorry। Okay, so now I have written something just like this in this less than and greater than symbol। Okay, so these are called HTML elements।
So all the HTML, your entire HTML scripting language is based on such kind of tags or elements. These are called HTML tags or HTML elements. Okay, so and this is the basic structure of any web page or HTML document. So what we have done is that, okay, I will explain you later that what is going on. So this is the basic structure of any HTML document, but after that we will have many things inside this. So first of all, one thing more, okay, one thing more, you have to put one doc type just like this, doc type of HTML. Okay, one thing I want to add here, that HTML is I want to write it here just like this, HT. Okay, one thing to remember as well, that HTML is not case sensitive. It means that ये जो है case sensitive नहीं, आप capitals में लिखें, आप small में लिखें, it doesn't care about the style of your writing, just like uppercase and lowercase. So it is, it doesn't have any restrictions while you write in capital or small. Okay, so it is not case sensitive. So it allows you to write whether you want to write in capital letters or small letters. Okay, so it is the basic structure of HTML document. So after writing such structure, you need to save it, like save, and just like we created the folder in E drive just like HTML. So save your folder in your desired location, but I'm saving in this folder which we created earlier. So one thing you must remember is that always okay, I'm writing the name first. Okay, it's just like this, it is the name of the file. Okay, so मैंने यहाँ पे इसका नाम रख दिया, I have kept the name of this file as start. So don't forget to put the HTML extension over here. It is the main thing, you must do it. Okay, otherwise it will be saved as txt file. You must mention .html. It is the extension of HTML document or any web page. So don't forget to save this as HTML. Okay, it is the secondary thing. The name part is secondary. You can keep any name, you can have any name, but you must write the HTML extension आपने ऐसा ही रखना है. आप नाम भले कुछ भी दे दो, लेकिन .html जो है आपने ज़रूर रख देना है, और ये कहाँ पे से हो रही, ई के अंदर, HTML के फोल्डर के अंदर. सो मैंने ये सेव कर लिया. नाउ देखते हैं कि देखो ये यहाँ पर ई के अंदर HTML और यहाँ पर ये सेव हो चुका है. चलो इसको हम ओपन करके देखते हैं ब्राउज़र के अंदर ये कैसा लग रहा है. कुछ भी नहीं, अब ये फिलहाल खाली नज़र आ रहा है, क्योंकि हमने कुछ भी नहीं लिखा. सो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ HTML डॉक्यूमेंट. सो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है. इट विल बी ऑल फॉर टुडे. होप एंड प्रेइंग वी विल सी यू इन द नेक्स्ट ट्यूटोरियल. टिल देन अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.